Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. The topic of this lecture is classification of animals. This is first chapter of your book. So let's start the chapter from the first topic, that is classification of living things. Let us first recall that what living things are. Living things are the things that can move, that can grow, that can move, that can respond, that can reproduce. Whereas non-living things cannot do these things. They cannot move, they cannot grow, they cannot respond, they are still. So, the scientists who study living things are called biologists. वो साइंटिस्ट जो कि लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ को, लिविंग थिंग्स की बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं. Approximately there are 8.7 million types of living things on earth. इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि दुनिया में 8.7 मिलियन तरह की लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं. बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इतना ह्यूज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. इन लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन. लिविंग थिंग्स को या किसी भी चीज़ को कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जब हम डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. और बायोलॉजिस्ट ने जब लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया तो उन्होंने उन ग्रुप्स के नाम रख दिए किंगडम्स. देयर आर 5 किंगडम्स. सी, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स. बैक्टीरिया के किंगडम में बैक्टीरिया की जितनी टाइप्स हैं वो होंगी. एल्गी के किंगडम में एल्गी की जितनी टाइप्स हैं, फंजाई की टाइप्स. एनिमल्स में जितने एनिमल्स की टाइप्स हैं वो सब एनिमल किंगडम में आ जाएगा, और प्लांट किंगडम में इसी तरह प्लांट्स की टाइप्स आ जाएगी. 2 मेन किंगडम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स के किंगडम में देयर आर 3,50,000 kinds of plants exist. और एनिमल्स के किंगडम में 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं. अब आप देखें, इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं जिनको हमने, इतनी ज़्यादा काइंड्स हैं जिनको हमने कंबाइन करके एक किंगडम में डाल दिया, दैट इज एनिमल किंगडम. नाउ देयर इज अ चार्ट जिसमें लिविंग थिंग्स की कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फर्स्ट कैटेगराइज्ड into two categories. Number one are those made up of single cell and those made up of many cells. पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है. दिस इज द कैटेगरी हैविंग ओनली वन सेल एंड दिस कैटेगरी हैविंग मोर देन वन सेल. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने उनको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल से बने उनको हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं. फर्दर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज और हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल. कुछ यूनिसेलुलर्स ऐसे हैं जिनमें नो ऑब्वियस न्यूक्लियस नहीं होता. ऑब्वियस न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी सेल. कुछ में न्यूक्लियस नहीं होता और कुछ में न्यूक्लियस मौजूद होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस अगेन हमने यूनिसेलुलर्स को कैटेगराइज किया 2 ग्रुप्स में. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मल्टीसेलुलर को हमने प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. एक कैटेगरी वो है जिनकी सेल वॉल नहीं होती, लाइक एनिमल्स. हर सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, बट कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, लाइक एनिमल्स में नहीं होती. और सेल्स हैव एन ऑब्वियस सेल वॉल. अब वो मल्टीसेलुलर्स जिनकी सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है उन्हें प्लांट्स भी कहते हैं. अब उन प्लांट्स को हमने आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इस कैटेगरी में
these cells contain chlorophyll and they can make their own food with the help of photosynthesis. Plants, ये वाले जो plants हैं, they have chlorophyll और इनका green color भी इसी chlorophyll की वजह से होता है, and they can make their own food. Whereas this category do not contains chlorophyll. इस कैटेगरी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता. इसकी एग्जांपल फंजाई की आती है. they observe they these organisms feeds by absorption. ये दूसरे अपने environment पे dependent होते हैं for their food. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कैटेगरी में जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है, they can make their own food. Okay, so there is an amazing fact. Biologists who classify living things are called taxonomists. हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि those scientists who study living organisms are known as biologists, and those biologists who classify, जिन्होंने क्लासिफिकेशन की है लिविंग थिंग्स की, जो 5 किंगडम्स बनाई है, उन बायोलॉजिस्ट को हम टैक्सोनॉमिस्ट्स भी कहते हैं. Now we are going to study the animal kingdom. Our chapter is classification of animals. The main topic is the animal kingdom. So the animal kingdom is divided into two groups. One are vertebrates. Vertebrates are those animals that have backbones, and invertebrates are animals that do not have backbone. Backbone को spine भी कहते हैं. Those animals who have spine are known as vertebrates, and those who don't have spines are known as invertebrates. Spines are backbones. Like we human beings, we are also vertebrates. हमारी backbones हैं जिसकी वजह से हम अपना एक posture maintain कर सकते हैं, हमारी body में support है. Vertebrates की examples आती हैं fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. Whereas invertebrates are bee, slug, butterfly, worm, snail, spider, octopus. These all are invertebrates. Invertebrates को अगर हम थोड़ा और study करें तो they don't have backbones. Almost 97% of animals are invertebrates. हमने पीछे पढ़ा कि animals की kingdom में there is approximately 1 million kinds of animals. उन 1 million में से 97% of animals are invertebrates, means they don't have backbones. और इनकी स्किन पे इनकी एक और आप कह लें करेक्टरिस्टिक्स है इनवर्टिब्रेट्स का एक और, कि इनकी स्किन पे शेल होता है. ये बड़ी टफ सी स्किन होती है जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. दिस why the skeleton is known as exoskeleton, because it is on the outside of the body. वो skeleton with shell जो tough skin है वो उनकी body के outside पे नजर आती है. We human beings we also have a skeleton, but हमारा skeleton exoskeleton नहीं है because it's inner. हमारी body के अंदर है skeleton. हमारी body के बाहर से कोई shell या कोई tough skin नहीं नजर आती. Invertebrates की नजर आती है, like beetle है, snail है, spider है. इनके they have exoskeletons. So आज के हमारे लेक्चर में हमारी यहीं तक हमारा टॉपिक हुए हैं, जिसको अगर हम समराइज करें तो हमने पहले ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में वी स्टडी दैट हु बायोलॉजिस्ट्स आर, व्हाट आर किंगडम्स, व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन. Then we studied that there are 5 kingdoms of living things, and then we studied some living things that are categorized on basis of some characteristics. और उसके बाद हमने देखी animal kingdom, and animal kingdom में we read that there are two classes. They are classified into two groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates having backbones and invertebrates don't have backbones and they have exoskeletons. This is the today's lecture. If you face any difficulty, any confusion, you can ask. For now, thank you for listening the lecture. Allah Hafiz.